Good morning. Attend your roll call. Himanshu, Sagar Yadav, Garima, Muskan, Neha, Sneha, Kunal, Neha Goyal, Yes, sir. Lakita, Yes, sir. Ritu, Yes, sir. Tanisha, Present. Jyoti, Sonu, Ravinder, Dipanshi, Yes, sir. Aditya, Prachi, Divyadaya, Bhupender, Himani, Priya, Nitika, Tanu Sharma, Priya, Payal, Yes, sir. Sonika, Tanu, Meenakshi, Present. Renu Jakar, Present, sir. Shivani, Khushi, Present, sir. Vishu, Kanishka Seni, Divya, Vikas, Nancy, Komal, Anshu, Present, sir. Ravi, Tushar, Present, sir. Harsh, Vineet, Muskan, Yes, sir. Kajal, Manisha, Yes, sir. Mayank, Harsh, Gaurav, Seema, Yes, sir. Piyush, Preeti, Nikhil, Kirti, Present, sir. प्रियांशु मलिक। Yes, sir. हो गई सभी की अटेंडेंस? Yes. बेटा आज आपको करना क्या है, आपको लास्ट टाइम हमने बता दिया था, आपको काम दिया था हमने प्रैक्टिकल से रिलेटेड। आज आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेशन देनी है। डेमोस्ट्रेशन मींस आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाना, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक केमिकल को, कोई भी चीज जो आपके इस्तेमाल होती है आपके प्रैक्टिकल के दौरान, जब आप प्रोसीजर को अडेप्ट करते हैं जो पार्टिकुलर है किसी प्रिपरेशन का या किसी इंसॉल्युबल के डिटर्मिनेशन का या फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, तो आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। आप हर चीज को शो करेंगे, बताएंगे कि दैट्स द प्रोसीजर, स्टार्टिंग हमने यहाँ पे किया, ये रिक्वायरमेंट है, पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, आप कोई बीकर यूज करते हैं नहीं करते, कोई टेस्ट ट्यूब यूज की, जो भी किया एवरीथिंग, आप सारी की सारी बातें किसी भी प्रैक्टिकल की अब आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे बताएंगे सभी को। ठीक हो गया? कोई डाउट हो आपको, पहले मेरे से कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी भी तरीके की, तो आप वन बाय वन आप आएंगे और अपना डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देंगे प्रैक्टिकल के बारे में। आप सभी ने कल अपना प्रैक्टिकल चूज कर लिया था, आपको कहा गया था कि आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रैक्टिकल ले लें। पहले दिन जैसे आप एक एक करके सभी अलग अलग प्रैक्टिकल आप सभी बच्चों ने ले लिए, जैसे फर्स्ट रोल नंबर का अलग, नेक्स्ट का अलग, इस टाइप से, उसके बाद वो रिपीट होता चला जाएगा सेम एक्सपेरिमेंट उसके बाद। तो जिन बच्चों के ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिपीटिशन में है, वो दोनों बच्चे इकट्ठे आ जाएंगे, तो दोनों एक बार एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा, उसके बाद दूसरा बच्चा उसी की डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा, एंड सो ऑन स्टेप से डेमोन्स्ट्रेशन हमारी चलती रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा आपका, उसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा बच्चा सोचे कि हमारा तो दूसरे प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ नहीं। यानी मान लीजिए टोटल आपके सिलेबाई के अंदर मान लीजिए आपके 15 प्रैक्टिकल हैं, तो 15 डेज के अंदर आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। वो बदलते रहेंगे प्रैक्टिकल, एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर, हर बच्चे को हर कोई डेमोन्स्ट्रेशन देनी ही है, लेकिन वो चेंज होते चले जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से, आपको उसके बारे में बोलना आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो बोलते वक्त आपके दिमाग में कोई चीज आ गई तो आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से,
है ना। तो आपकी खुद की क्लियरेंस भी उस चीज में बढ़ जाएगी, तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहने वाला है। तो आपको सारी यानी क्वेश्चनों का पता चल जाएगा। बीच में मान लीजिए मैं आपसे कोई पूछ लूं कोई क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा इसके दौरान क्या पूछ सकते हैं, है ना। या मैं आपको कोई सजेशन दे दूं कि बेटा ऐसे आपको करना चाहिए, इसके दौरान ये प्रिकॉशन आप करो, जो भी चीज है, मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की डेमोस्ट्रेशन सबसे पहले बच्चे के साथ। तो सबसे पहला रोल नंबर, क्या नाम बेटा आपका? गरिमा, रोल नंबर? हाँ बेटा, 267 रोल नंबर है गरिमा का। तो बेटा आप आए सबसे पहले अपने डेमोस्ट्रेशन के लिए। Good morning, everyone. My name is Prema from BSc Final Year. Today, I'm going to demonstrate an experiment of inorganic analysis of insoluble salt. हमें कोई भी सॉल्ट गिवन हो सकता है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ हमारे सिलेबस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका नाम है AgCl, AgBr, AgI, PbSO4, SiO2, Al2O3। तो सपोज हम मानते हैं कि हमें PbSO4 गिवन सॉल्युबल सॉल्ट है, तो हम उसकी इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दिया गया है PbSO4, lead sulfate, ammonium acetate, acetic acid, water, potassium iodide, hydrochloric acid, barium chloride, measuring cylinder, dropper, spatula, and 3 to 4 test tubes. Burner and Wire, tripod stand and tripod stand, wire guards. wire gauge. These are the requirements for today's experiment. So first of all, we will take the insoluble salt, which is lead sulfate, and we will check its solubility in ammonium acetate. So for this, we will take this beaker and take some of this, and with the help of spatula in this beaker, and add ammonium acetate in that beaker with spatula, and glacial acetic acid. Then all these things will be heated on the burner, and if then we will stir it, then if it will be soluble, then the PbSO4 is present. PbSO4 is present here. If it is not soluble, then we will test other, but it will be soluble as it is PbSO4. Then we will take this solution in 2 test tubes. We will separate out it in 2 test tubes. In the first test tube, we will add ammonium acetate and dissolve it. If it gets dissolved, then yellow PPTs are formed. When yellow PPTs are formed, it shows the presence of Pb positive ion. And in the second test tube, this insoluble is also added. In this test tube, we will add hydrochloric acid and barium chloride. And again, we will dissolve this. If it gets dissolved and white PPTs are formed, then the SO4 to negative ion presence should, it means that PbSO4
कि insoluble salt की inorganic analysis complete होती है इसी तरह. Good morning. I'm Tushar, student of BSc Chemistry on our third year. Today, I'm here to give a demonstration on the qualitative analysis of insoluble salt. According to our syllabi, we have given AgCl, AgBr, PbSO4, AgI, and silicon oxide and aluminium oxide. Today, we are going to discuss about how we will analyze the silver chloride. So for this, we will follow the insoluble scheme. First, we will check. Here we have our sodium chloride, silver chloride, to which we will check its solubility first. This is the basic step which we will follow. तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे? Small amount of AgCl लेंगे. In the beaker we can take, or in the test tube, whichever suitable. To which we will add water, and we will see it's not soluble. And when we will take again AgCl, and we will add HCl, we will add dilute first. We will check whether it is soluble or insoluble, and after that we will check its solubility in concentrated hydrochloric acid. In the both cases, it will not be soluble because we are taking here an insoluble salt. Then we will follow our scheme, to which first we will take ammonium acetate. We have to take the concentrated ammonium acetate, for which we can make solution because it will be a little more convenient when we do the test. So we can prepare the solution like a small amount of water. We can dissolve this ammonium acetate. It will become a concentrated one, and to which we will add a little amount of silver chloride. When we will add the little amount of silver chloride to that only, we will add a dilute acetic acid in a little amount, and we will warm it, and we will check whether it is soluble or insoluble. And when we check it, we will find that it is insoluble. That concludes that our salt is not lead sulfate. If it would have been soluble in that, we can say lead sulfate is present, or maybe present, and we will confirm it with further test. And here we can say lead sulfate is not present. Then we will come to our second test, for which सो ये था थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको समझाया पहले स्टेप के लिए. अब हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं वो दिखाते हैं. तो सबसे पहले हमने AgCl लिया था. AgCl को हमने क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ AgCl हम लेंगे इन द टेस्ट ट्यूब. जब हम इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे concentrated ammonium acetate, to which after adding this to the whole mixture, we will add a little amount of dilute acetic acid. So, and we will heat it. We can use water bath or we can direct heat it, but sometimes direct heating can cause little incidents in the lab. So water bath is a safer, or you can say more convenient way to do that kind of stuff. तो हम इसके अंदर करेंगे. तो इसके बाद देखेंगे आफ्टर सम टाइम जब ये वार्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये सोल्यूबल होगा या नहीं होगा. और हमें पता चलेगा कि ये सोल्यूबल नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर लेड सल्फेट प्रेजेंट नहीं है. अब उसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप के आगे प्रोसीडिंग करेंगे, और इसको हम वॉश कर लेंगे और फ्रेश टेस्ट ट्यूब ले लेंगे. To the fresh test tube which we have taken here, we will add again a little amount of silver chloride, to which we will add a little amount of concentrated ammonia. When we will add, we can directly pour it, but sometimes using funnel will be convenient, like this, and we can transport it.
thought you keep funnel use करेंगे, but that is the common mistake which students do in the daily basis. We see a lot of people do that. So we will use dropper instead of funnel. So we will take a little amount of concentrated ammonia and we will transfer it to the test tube containing AgCl. After that, we will heat it again in the water pumps. So we will see here that it will be soluble and it will give us a little amount of prediction that maybe AgCl is present here. So after that, when the soluble, we will proceed to the confirmatory test, for which we will transfer that the soluble part in two other test tubes, and to one of the test tube, just assume like this is the first part. To first part, we will add KI, potassium iodide. And when we will add, we can make solution of potassium iodide. So, and we can just using dropper, we can pour a little in the soluble ammonia and that AgCl. We will get yellow PPTs, which confirms that AgCl present. And for further confirmation, we will do the second test. And for the second, assume it's a second one. So to the second part, we will add a little amount of nitric acid. We will use dilute nitric acid. For dilution, I have seen a lot of people usually transfer acid, water to the acid, which is quite dangerous. We have to transfer acid in the water because it's an exothermic process when we transfer, when we transfer water to the acid, it will be an exothermic reaction and heat will be produced there, released there. So there may be some burns or something incident can happen. So for precaution, we can transfer acid to the water, but still we have to stir it constantly, and drop by drop we have to use a dropper and transfer it in the water. In this way, we will prepare our dilute nitric acid solution, and that we will transfer in this test tube containing the second part, which we have divided earlier. And we will see, we know concentrated ammonia or dilute ammonia are not soluble, means AgCl is not soluble in ammonia. So it will create white PPTs in this test tube. And this confirms that AgCl is the insoluble salt given to us. Thank you. Hello everyone, my name is Neha. I am a student of BSc final year. Today I will show the demonstration to prepare copper tetramine complex. For this, first of all, we will need copper sulfate. We will take 2.5 gram of copper sulfate from this in a beaker and then add 7.5 ml of ammonia in this beaker and stir the beaker using the stirrer constantly. After that, we will add 15 ml of ethyl alcohol in the same beaker and again stir the solution using the stirrer. Then this mixture is heated on the water bath slowly for some time and we will wait for the precipitate to come out. Then using the Whatman filter paper, we will separate out the PPTs which are dark blue in color. And these PPTs are of a copper tetramine complex which is prepared. We will measure 7.5 ml of ammonia using this measuring cylinder. And this is ammonia. We will take 7.5 ml in this measuring cylinder and pour down in the beaker in which we have taken copper sulfate. Now, after that, using the measuring cylinder, we will measure 15 ml of ethyl alcohol and will take in this measuring cylinder. Now we will pour this in the beaker. Now slowly stirring the solution
We will heat this in the water bath till the precipitate come out, dark blue color, which indicates the presence of copper tetramine complex. Neha Goyal, I'm the student of BSc Chemistry Honors final year. Today in this video, I am going to demonstrate the preparation of mercuric tetrathiosinate cobaltate complex. तो उसके लिए हमें जो केमिकल्स चाहिए वो है हमारा अमोनियम थायोसाइनेट। My name is Neha Goyal. I am the student of BSc Chemistry Honors final year. I am going to prepare mercuric tetrathiosinate cobaltate complex. For this, we required ammonium thiocyanate, cobalt chloride hexahydrate, and mercuric chloride. तो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, सबसे पहले हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर हम 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, और अब हम इसमें डालेंगे अमोनियम थायोसाइनेट 2.5 ग्राम, और फिर अब हम इसमें बॉइलिंग वाटर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक सेपरेट बीकर लेंगे, उसमें हम मर्क्यूरिक क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे 10 ml ऑफ वाटर। अब जो हमारे दोनों सॉल्यूशन बने थे, अब हम उनको डिसॉल्व कर लेंगे धीरे धीरे। अब जो हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, उसको मैं कंडेंसर में एडजस्ट करूंगी, इसको मैं कंडेंस करूंगी ताकि जो मेरा सॉल्वेंट लॉस हो वो कम से कम हो। तो उसके लिए मैं इसको 10 मिनट तक कंडेंस करूंगी मेरे सॉल्यूशन को। ये जो मेरी है, ये है मेरी कंडेंसर रोड। अब हम इसे 10 मिनट तक कंडेंसिंग करेंगे, इसकी कंडेंसिंग करेंगे ऐसे ही। 10 मिनट के बाद हमें कुछ ब्लू कलर के पीपीटी दिखने शुरू हो जाएंगे, तो फिर अब हम इसे निकाल लेंगे फिर से। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी तो आपने बार बार सुना होगा कि मैं कंडेंसिंग बोल रही थी, बट यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ, भले ही मैं कंडेंसर का यूज कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे कंडेंसिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली मेरे मिक्सचर को बॉइल कर रही हूँ। और यहाँ पे कंडेंसर का यूज करने का मेन मोटिव क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट लॉस है वो कम से कम हो। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने 2 क्लैंप का यूज किया है, ये जो हमारा नॉर्मल क्लैंप से अलग क्लैंप है ताकि ये राउंड बॉटम फ्लास्क को इजीली फोल्ड कर सके, और एक क्लैंप हमारा कंडेंसर को फोल्ड करने के लिए। तो लास्ट में जब हम देखेंगे कि हमारे ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होने शुरू हो गए, तो हम इसमें से आरबी को निकाल लेंगे।